Good evening, everyone. Welcome to another important CT360 series session on EduTap. And my dear friends, today we will be covering the important current affairs from 3rd to 4th of June 2025. So I hope that I'm audible and visible to all of you. And to ensure this, I request all of you to give me a thumbs up in the chat box. So my dear friends, in the today's session, we are going to cover important GA and ESI current affairs from the examination point of view. If you are preparing for RBI, NABARD, SEBI or other banking examinations, let me tell you that these sessions are going to helpful for your current affairs preparation, or wherever the current affairs is being asked and you are preparing for any such exam, then these sessions are really be going to very helpful for your exam preparation. So good evening, Komal, Gururaj and all other people who have joined us live today in this session. And today we will be covering important current affairs from 3rd to 4th of June 2025. And again, before starting this session, I would like to tell you here that we basically cover this session in three important parts. That is, first we revise the important aspects of the previous session. Then we move on to the important current affairs of these dates which are mentioned here. And then we solve the MCQs based on those current affairs. Okay. And apart from that, the major source that we are covering in the CT360 series session is your PIB, Live Mint, The Hindu, Economic Times, right? And let me tell you here, अगर आप इस सेशन को कवर करते हैं, डेफिनेटली लेट मी टेल यू हियर दैट आपका जो पीआईबी का सोर्स है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है? सो उसकी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एंड अगेन वेलकम एवरीबडी टू ऑल द in the today's CT360 series session. ठीक है जी? So I just want all of the people to just come here so that we can start with the first important part, that is the revision session. Before that, we will be seeing the important topics of the today's session, and you can see here that here is the complete list of all the topics that we are going to cover in the today's session. And let me tell you that here today the first 5 articles are basically for your ESI part, right? That is important for both phase 1 and phase 2 of your regulatory bodies exams, RBI and NABARD, right? Apart from that, the remaining articles are important for only phase 1 of the examination, as they are not related to our syllabus. And the people who are preparing for banking examinations, उनके लिए सभी important articles हैं for their phase 2 examination, right? क्योंकि मेंस एग्जाम के अंदर we basically see questions on the current affairs. अब हम start करते हैं revision से, and let's see that whether you have revised all the important aspects of the previous session or not. तो अब हम आपसे questions पूछेंगे दोस्तों. And here is the very first question on a very important scheme, that is to promote manufacturing of electric passenger cars in India. So पहली चीज आपको बताना है कि इस स्कीम के अंदर what exactly is the annual import cap on the number of units that can be imported. So what exactly is that particular cap is? Can anybody tell me that in the chat box? So it is basically 8,000 units per year with the minimum CIF value. So what exactly will be the minimum CIF value per unit of this particular part? That is 35,000. 35,000 is the right answer. Apart from that, there will be reduced customs duty. So what exactly was the reduced custom duty under this part? I told you about the duty foregone, right? There we understood about this reduced customs duty. So what exactly is that reduced custom duty? That is 15%. So 15% is the right answer. And I gave you a very interactive table so that you can remember this part. And what exactly was that way? Can anybody tell me in the chat box? I told you a mantra to basically retain the important aspects of this electric vehicle manufacturing scheme. What exactly it is? EV mantra. So EV mantra is here, which includes eligibility, value addition, minimum investment, application, number of imports, tariff, rules on spending and assurance. ठीक है जी? तो ईवी मंत्रा को याद रखिए, सारी चीजें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है? आई होप कि सभी को ये याद है. यस, गुरुराज, जोया, कृतिका, अर्जुन, all the people are giving me right, that is EV mantra. Absolutely right. I hope कि EV mantra से आपको सभी चीजें याद रही होंगी. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. Next question is India's first of its kind government funded AI based multimodal large language model. So what exactly is its name? It was been recently released during a summit, and the name of that is Bharat Jan. Bharat Jan is the right answer. Next question. Who has been appointed as the chairman of Defense Research and Development Organization? तो इनका tenure extend किया गया है. What is the name of that person? That is Sameer Kamath ji. So Sameer Kamath is the right answer. Next question. Who has been officially confirmed as the host city for the 2026 Asian Weightlifting Championships? तो Asian Weightlifting Championships कहाँ होंगी? That will be taking place in Ahmedabad.
सो अहमदाबाद के अंदर ये चैंपियनशिप कंडक्ट की जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू कंप्लीट 7 समिट्स चैलेंज. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन? 7 समिट्स चैलेंज को कंप्लीट करने वाले ये इंडिया के यंगेस्ट पर्सन बने हैं. एंड अक्रॉस द वर्ल्ड ही हैज बिकम द सेकंड यंगेस्ट पर्सन अक्रॉस द वर्ल्ड to submit these 7 highest peaks of all the continents. So what exactly is the name? The name of this person is, I'm waiting for a response in the chat box, my dear friends. What is the name of this person who is a 16 years old and he has completed this? So yes, it is Karthike. Absolutely right. Karthike. तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. सो ईशा फाउंडेशन के फाउंडर who has been recently awarded the Global Indian of the Year. What is the name? Sadhguru. Sadhguru is the name of the person, right? Sadhguru or Jaggi Vasudev. That is the right answer here. Absolutely right. Vishwanath Kartikeya Padakanti is the name of the person who is youngest Indian to complete 7 summits challenge. Well done. Next question. What is the name of the person who has won the Miss World 2025 contest? Miss World 2025 contest के winner का क्या नाम है? So what is the name of that person? So just remember, सबसे ऊपर ये थी जिनका नाम है ओपल. Opal Shuangsri is the name of this person who has won the Miss World 2025 contest, right? That is the right answer. Moving to the next question. So Dash became the first Indian origin singer with American Music Award. American Music Award जीतने वाली पहली Indian origin singer, that is Rajkumari is the name of the person. Next question. International Day of UN Peacekeepers was observed on which date? किस डेट को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं? That is 29th of May. That is the right answer. Now Nagshankar Temple in Bishwanath district of which state? किस स्टेट में ये टेम्पल है which was designated a model temple for turtle conservation? Turtle conservation के लिए मॉडल टेम्पल ये बनाया गया है. What is the name of this a particular state? That is Assam. Assam is the right answer. And this was being done on the occasion of World Turtle Day. तो World Turtle Day हम कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं? On which date this particular day has been celebrated? It is celebrated on 23rd of May. So my dear friends, with this I can see in the chat box all the people are giving me the right answers to the previous questions, previous sessions revision question that we have asked in this session, and I'm really glad to see कि आप सभी ने क्वेश्चंस का एकदम सही आंसर दिया. दैट मीन्स सभी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे से रिवीजन की है पिछले सेशन की, और अब हम कवर करेंगे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द टुडेज सेशन, दैट इज फ्रॉम 3rd और 4th of June 2025. ठीक है जी. तो सबसे पहला न्यूज आर्टिकल है हमारा, दैट इज इंडिया एड्स 2 वेटलैंड्स टू द रामसर साइट्स. तो इंडिया ने 2 वेटलैंड्स को ऐड किया है रामसर साइट्स के अंदर. क्या है ये 2 वेटलैंड्स दोस्तों? दीज आर खीचन वेटलैंड ऑफ फालोदी एंड मेनार वेटलैंड ऑफ उदयपुर. सो दोनों ही राजस्थान के अंदर हैं और दोनों को ऐड किया गया है एज अ वेटलैंड टू द रामसर साइट. ठीक है. जस्ट बिफोर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, on which date we celebrate World Environment Day, my dear friends? On 5th of June. So today there is a World Environment Day, and on that day we have basically seen that 2 new wetlands of India has been added to the Ramsar sites. And now the total number of Ramsar sites in India are 91. ठीक है. मेनार को बेसिकली हम बर्ड विलेज के नाम से जानते हैं फॉर देयर कम्युनिटी ड्रिवन कंजर्वेशन सक्सेस. एंड अगर हम बात करते हैं खीचन की, तो खीचन is renowned for hosting thousands of migratory damozel cranes, जिनको खुर्जा के नाम से भी जाना जाता है, राइट? सो खुर्जा इन्हें कहते हैं which is in खीचन, which comes to खीचन. और मेनार बर्ड विलेज है where it is in उदयपुर. ठीक है. और इसके साथ साथ अब राजस्थान के पास टोटल 4 रामसर साइट्स हैं, इंक्लूडिंग सांभर सॉल्ट लेक एंड द क्योलियादेव घाना नेशनल पार्क. ठीक है दोस्तों, जो कि भरतपुर के अंदर है. अगर हम बात करते हैं पूरे एशिया की, सो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर रामसर साइट्स कहीं पर हैं, दैट इज बेसिकली इन इंडिया ओनली. एब्सोल्युटली राइट. सो अगर हम बात करें कि इस चीज को अनाउंस किसने किया? भूपेंद्र यादव जी ने किया. कैन एनीबडी टेल मी ये कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं? ही इज सर्विंग एज द यूनियन मिनिस्टर फॉर विच मिनिस्ट्री? सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है. तो उन्होंने अनाउंस किया दैट खीचन इन पालूडी राजस्थान एंड मेनार इन उदयपुर राजस्थान. सो बेसिकली इन दोनों को ऐड किया गया है एज अ रामसर साइट.
ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ एग्जैक्टली वी कैन रिटेन इट। सो उसके लिए एक छोटा सा रिमोनिक है मेरे पास आपके लिए, सो जस्ट ट्राई टू सी हियर। राजस्थान की, सो गाइज नाउ आई हैव टू यूज हिंदी, लाइक क्योंकि इसको याद करने के लिए हमें हिंदी में ही करना पड़ेगा। तो राजस्थान की पहली खिचड़ी खाकर रामसर मीनार उड़े। राजस्थान की पहली खिचड़ी खाकर रामसर मीनार उड़े। अगर ये लाइन आपको याद हो जाती है तो पूरी न्यूज आपको याद रहेगी। क्यों याद रहेगी? राजस्थान के दोनों साइट्स हैं विच हैज बीन एडेड एज अ रामसर साइट्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, पहली इज द लोकेशन वेयर एग्जैक्टली इट इज। सो खींचन, जो खींचन है ये कहां पर है? फालोडी के अंदर है। इसको आप पहली खिचड़ी के नाम से याद कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग मीनार इन उदयपुर। सो मीनार उड़े, मीनार उदयपुर। और ये किसकी बात कर रहे हैं? हम रामसर साइट्स की बात कर रहे हैं। सो विल यू गाइस बी एबल टू रिमेंबर इट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू? So Ram Yadke, we will be taking all your queries at the end of the session. Do not worry about it. Just try to focus on the today's session right now. Okay? पहले सेशन को अटेंड करते हैं, उसके बाद आपकी सारी क्वेरीज को केटर किया जाएगा। ठीक है? सो दोस्तों, will you be able to remember this part? ओके, सो राजस्थान की पहली खिचड़ी खाकर रामसर मीनार उड़े। ये याद रखिए, आपको ये पूरी न्यूज यहां पर याद रहेगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। व्हाट एग्जैक्टली इज द नेक्स्ट पार्ट? दैट इज सम स्टैटिक इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमेंबर अबाउट रामसर। तो रामसर वेटलैंड्स की बात करें, सो ये वो वेटलैंड्स हैं विच आर ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं इंटरनेशनली फॉर देयर कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वेटलैंड, राइट। सो अगर हम रामसर साइट्स की बात करते हैं दोस्तों, बेसिकली इट इज प्लेस्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन किया गया था एंड रामसर इज अ प्लेस इन ईरान। रामसर इज द प्लेस इन ईरान, 1971 में इसे साइन किया गया था। इंडिया की बात करें, सो इंडिया जॉइंड इट इन 1982। इंडिया जॉइंड इट ऑन 1st of February 1982। ठीक है, अब वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स, these are vital ecosystems for biodiversity conservation, flood mitigation, water purification। तो ये सारे काम करते हैं एक वेटलैंड। ठीक है, और रामसर स्टेटस इनको दिया जाता है उनके एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और कल्चरल वैल्यू के लिए। तो यहां पर आई बिलीव कि आप सभी को याद रहेगा हाउ एग्जैक्टली वी कैन रिमेंबर दिस विद द हेल्प ऑफ दैट स्मॉल न्यूमोनिक, and with the help of that you will be able to cover it, okay, from the examination point of view. Now my dear friends, let's move on to the next part. अब दूसरी स्टेटमेंट पर चलते हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर चलते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन सेंसस 2027। सो पॉपुलेशन सेंसस 2027, you all know guys that last year the last time the census was been released in year 2011. Last time the census was been released in year 2011. What exactly we do basically in the census? We count the population of the country and then we basically monitor some different aspects of the population, राइट, कि लिटरेसी रेट कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट के अंदर है, कम कहां पर है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है। तो ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स को हम कवर करते हैं द पॉपुलेशन सेंसस। सो पॉपुलेशन सेंसस गवर्नमेंट ने कहा कि 2021 के अंदर बेसिकली वी फाइनलाइज्ड दैट वी विल बी कंडक्टिंग द सेंसस, राइट, इन 2 phases, but due to the COVID-19 pandemic we were unable to execute the population census in 2021. So when exactly we will be getting the next census, as it is really very important exercise in order to understand about the demography of the country, so we will be conducting it in 2027. So population 2027, population census 2027 will be conducted in 2 phases. इसको भी 2 phase के अंदर conduct किया जाएगा। In the first phase we will be focusing on hilly and snow hit areas of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Ladakh, और ये 1st of October 2026 को स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए रेफरेंस डेट क्या है आपकी? 1st October 2026। एंड द सेकेंड फेज कवरिंग अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट विल बी फ्रॉम 1st of March 2027। दैट मीन्स लाइक गाइस, व्हेनेवर यू सेलिब्रेट अ बर्थडे, राइट, तो 12 बजे यू बेसिकली कट योर केक। सो 12 बजे, जब 12 बज जाएंगे एंड 1st of March विल स्टार्ट,
So that is the reference date for this population census for 2027 for the rest of the country. And for those snow and hill areas, basically for them the reference date will be 1st of October 2026. और दोस्तों ये इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा. ऑल्सो द फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस सेंसस टू इंक्लूड कास्ट इन्यूमरेशन. अगर हम बात करते हैं कास्ट इन्यूमरेशन की, दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन दैट जो कास्ट इन्यूमरेशन की जाएगी, दैट मीन्स इस बार जो पॉपुलेशन सेंसस को हम कंडक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसमें हम कास्ट को भी इंक्लूड करेंगे, कास्ट रिलेटेड डेटा भी इंक्लूड किया जाएगा, राइट. सो दैट इज बेसिकली द कास्ट इन्यूमरेशन. इससे पहले ऐसा कास्ट इन्यूमरेशन किसी सेंसस का पार्ट बना था बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, एंड नाउ दिस विल बी द फर्स्ट सच census where we will be including the caste enumeration. Okay, and this will be carried out under the Census Act 1948 and Census Rules 1990. Now if I ask you, can anybody tell me that in which year the first edition of the census took place? क्योंकि अगर हम बात करें 2011 की, it was the 15th edition. This was the 15th edition. Can anybody tell me when exactly was the first census took place? It was in 1882. तो 1872 के अंदर पहला सेंसस हुआ था, 1872. So in 1872 the first census was been conducted. Okay, that is the right part. So I hope everybody is very much clear with all of these parts, right guys? Okay, so this is all that we need to cover here. अगर हम बात करते हैं लास्ट सेंसस की, लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, वो भी 2 फेजेस में हुआ था. फेज 1 में हाउस लिस्टिंग थी, फेज 2 के अंदर आपका पॉपुलेशन एन्यूमरेशन किया गया था, ठीक है. देन प्लान्ड सेंसस 2021 वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू. नाउ हाउ एग्जैक्टली यू कैन रिटेन इट, हाउ एग्जैक्टली यू कैन रिमेंबर दिस होल इंफॉर्मेशन? डू यू रियली वांट मी टू मेक अ mnemonic फॉर ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स. So do you really want me to come with a new mnemonic for it? So let me give you a very small detail in order to retain it. Okay, what exactly it is? Just remember, India population will turn 27. India's population will turn 27 after celebrating 26th birthday. After celebrating 26th birthday digitally. डिजिटल इंडिया का जमाना है, तो डिजिटली सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे विद कास्ट सेंसस. तो यहां से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी. इंडिया पॉपुलेशन विल टर्न 27 आफ्टर सेलिब्रेटिंग 26th बर्थडे डिजिटली विद कास्ट सेंसस. तो यहां पर क्या आएगा? पॉपुलेशन सेंसस 2027 है, राइट. 2027 स्टार्ट कब कर रहे हैं हम? 26 से स्टार्ट कर रहे हैं. 2026 विल बी द फर्स्ट रेफरेंस डेट फॉर दीज स्टेट्स, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये डिजिटली कंडक्ट किया जाएगा, पहली बार डिजिटली कंडक्ट किया जाएगा, और कास्ट इन्यूमरेशन भी इंक्लूड की जाएगी, ठीक है. सो कास्ट इन्यूमरेशन को भी इंक्लूड किया जाएगा यहां पर. सो विद दिस वन लाइन यू विल बी एबल टू रिटेन ऑल दिस इंफॉर्मेशन दैट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, on which a question can be asked in the exam, and I hope that this will make it really easy for you to understand. Are you guys getting it? So do you like this particular small mnemonic with the help of which you can just remember it? Okay, so just remember this part and you will be able to retain all this information. So guys, with this we are done with the population census 2027 data. And now let's move on to the next news article, that is Global Platform for Disaster Risk Reduction, that is GP 2025. So ये एक 8th session था of the Global Platform for Disaster Risk Reduction. तो disaster risk काफी सारे होते हैं दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा. whenever earthquake comes, तो उस particular जगह में बहुत ज्यादा devastation होती है, right. Loss of it leads to loss of lives, migration of people from one place to another, loss of economy. तो काफी सारी चीजें हम लूज करते हैं ड्यू टू द डिजास्टर्स, बी इट योर फ्लड, बी इट योर earthquake or any other disaster, right. So it is really very important that whatever the risks which are associated with these disasters, we need to reduce them. And that is why
we have the Global Platform for Disaster Risk Reduction. So it is organized by the United Nations Office for Disaster Risk Reduction, that is UNDRR. और इसको किसने होस्ट किया है? It has been hosted by Government of Switzerland in Geneva. तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का ये जो हमारा एक 8th सेशन हुआ, where exactly it has taken place in Geneva, with the theme every day counts, act for resilience today. Just like in your preparation, every day counts, you need to make sure that you are using your time very wisely. Similarly, this organization also states that every day counts, act for resilience today, right? So this is the theme for Global Platform for Disaster Risk Reduction 2025. ठीक है? So this is the midterm review of the Sendai framework. अब ये Sendai framework क्या है दोस्तों? What exactly is the Sendai framework? Let me tell you that whatever the loss that we see due to these disasters. So there was a meeting which took place in 2015 in Sendai, Japan. Sendai is the name of a place in Japan. And there we basically sit together, we identified the different risks which are causing and what exactly are the losses that we can see due to these disasters, right? So that's why this meeting took place in Sendai, Japan in 2015 at the 3rd United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction, where we had a goal to reduce the disaster risk. हमें डिजास्टर रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करना है, उसको रिड्यूस करना है, उसके ऊपर काम करना है. वी नीड टू मेक आवरसेल्व्स रेजिलिएंट. And that's why this particular conference took place, to understand and to reduce disaster risk and losses in lives, livelihoods, health and the ecosystem. इन सभी चीजों का लॉस होता है हमें, right, due to the disasters, and that is why it is very important to reduce the disaster risk across these lines. So now the Sendai framework works with the other 2030 agenda agreements. अब बाकी कौन से एजेंडाज हैं जिनके साथ ये पैरेलली काम करता है? That is also important. The one of them is the Paris Agreement. That is Paris Agreement on climate change. We all know that we want to sustain a particular temperature of Earth, right, under the Paris climate change. So the Paris Agreement is there. Then this Ababa Action Agenda, which is for financing for the development. हम सभी जानते हैं, my dear friends, that for the development we need good amount of funds so that we can invest it, we can procure the resources, the land, all the things in order for the development. Then we are having the new urban agenda, which basically works for the smart and safe cities. That is new urban agenda. And then ultimately the sustainable development goals. We all know that we want to achieve the sustainable development goals by 2030, and we are having the list of 17 sustainable development goals, right, that we want to achieve by 2030. So in चारों एजेंडास के साथ मिलकर Sendai framework also works hand in hand along with them, so that we can achieve and we can reduce the disaster related risks. Now my dear friends, it is having one goal, that what we want to do under this part, we want to prevent new and reduce existing disaster risk. अभी जो हमारे existing disaster risk है उनको हमें रोकना है, right, उनके अगेंस्ट हमें resilient बनना है. Apart from that, what are the new risks which can also be taking place in the upcoming time? तो उनको भी हमें identify करना है. कैसे करेंगे? Through implementation of integrated and inclusive economic, structural, legal, social, health, cultural, educational, environmental, technological. So you can see here that all the aspects of the society, we will be catering all of them in order to fight against these disaster related risks, and under this Sendai framework. ठीक है? So this is a very important part. Sendai framework, I hope that आप सभी को थोड़ा सा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मिली है, इसको और बेटर तरीके से समझते हैं. There are 4 priorities for action under the Sendai framework. What exactly these are? See guys, first what we will be doing, we will be understanding the disaster risk. Let's take an example कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है? सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं? आप अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? Then we will strengthen disaster risk governance to manage the disaster risk. अब उससे क्या रिस्क है हमें, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेंथन करेंगे उस रिस्क के अगेंस्ट अपनी गवर्नेंस को. हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी आर बेसिकली मेकिंग आवरसेल्व्स रेजिलिएंट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर रिस्क. ठीक है? देन इन्वेस्टिंग इन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. उस डिजास्टर रिस्क, जो डिजास्टर रिस्क है उसको हम कम करने के लिए क्या करेंगे?
उसके प्रति रेजिलिएंट होने के लिए हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज एनहांसिंग द डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स। हम एक बेटर रिस्पॉन्स कर पाए अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई डिजास्टर आता है, so we are basically well prepared and we are able to take all the relevant steps in order to fight against it. So these are basically the important things that we need to understand under the Sendai framework. ठीक है जी, I hope this is clear. Four priorities for action: understanding, strengthening, investing and enhancing. So these are the four priority action. Apart from that, under the Sendai framework, there are 7 targets that we want to achieve by 2030. What exactly it is? There are some pillars that we want to reduce and there are some pillars that we want to increase. So reduce हम किसको करेंगे? My dear friends, whenever a disaster is coming, we see that there is a loss of lives. So we have to reduce global disaster mortality. Then the number of people who are getting, who are losing their lives, who are losing the livelihoods, who are losing their health. So basically we want to reduce the number of affected people. और इसके साथ साथ they are also losing the jobs. तो इससे economic loss भी हो रहा है. So we will be reducing economic loss in relation to the GDP. And apart from that, the damage to the critical infrastructure and services disruption. जब भी ऐसा कोई डिजास्टर होता है तो सर्विसेज डिसरप्ट होती है हमारी, फोन के कनेक्शंस नहीं आते और हेल्थ फैसिलिटीज पर इंपैक्ट पड़ता है, रेस्क्यू ऑपरेशंस पर इंपैक्ट पड़ता है. सो ऑल दीज थिंग्स वी जस्ट वांट टू रिड्यूस ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, इकोनॉमिक लॉस एंड डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. दोस्तों तो याद नहीं करना, चीजों को समझना है. व्हेन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, we will already be able to retain them from a longer period of time. Okay, now what exactly we want to increase here? We want to increase the countries with a national and local DRR strategy, that is disaster risk reduction strategies. जिन countries के पास है ऐसे number of countries को हमें increase करना है by 2020. ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि कंट्री आपस में ही लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी आत्मनिर्भर, राइट? बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर मान लीजिए कि देयर इज अनदर कंट्री विच इज हैविंग अ बेटर टेक्नोलॉजी which can be used for fighting against such kind of situation, तो we can take the help. तो उसके लिए हमारे एक better cooperation होना चाहिए. Then availability and access to early warning systems and DRR information. तो early warning system होना चाहिए. For example, if there is a prediction of flood, that in that particular there is a place X, there we are expecting to have a very high rains, right? Very heavy rains. So we can basically make sure that yes, we are making people evacuating that particular place so that we can just save their lives. So उसके लिए early warning systems का होना जरूरी है. And to basically implement all of this, the whole responsibility is with the United Nations Office for Disaster Risk Reduction. तो उसको ये टास्क दिया गया है कि वो इंप्लीमेंट करने में हेल्प करे, फॉलो अप ले, रिव्यू करे सेंडाई फ्रेमवर्क की कंट्रीज ने किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया, एडॉप्ट किया और इस पर काम किया जा रहा है, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट द सेंडाई फ्रेमवर्क. याद रखिए जापान में 2015 में मीटिंग हुई थी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर काम करता है. सो जस्ट रिमेंबर सेंडाई helps in reducing disaster risk. ठीक है, सेंडाई हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क. तो इस लाइन से याद रखिएगा इस चीज को कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू हियर. ओके, रेस्ट हमने काफी चीजों को अच्छे से डिटेल में समझ लिया है. आई होप कि आपके लिए इजी रहेगा चीजों को अंडरस्टैंड करना. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पर. यूएई विंस प्रेसिडेंसी ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएन हैबिटेट, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज द हैबिटेट? Habitat is the place where we basically live, right? Where we basically get the food, shelter, water and all other services like our home. So UN Habitat is basically the organization which is responsible for making these habitats inclusive, fair for all the people, right? Safe. So UAE ने इस UN Habitat की जो जनरल असेंबली हुई है दोस्तों, उसकी प्रेसिडेंसी को जीत लिया है, right? United Arab Emirates achieved diplomatic milestone after getting the presidency of General Assembly of UN Habitat, that is United Nations Human Settlements Program. ठीक है, सो इसके साथ क्या होगा, उसका जो रोल है इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट गोल्स, तो यहां पर ये इस पे काम कर पाएगा. नाउ गाइस यू हैव टू टेल मी हियर, अगर हम बात करते हैं हाउसिंग की, क्योंकि हम यहाँ पर बात हैबिटेट की कर रहे हैं, राइट? एंड वी लिव इन द हाउसेस. सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल with which is related to the housing? Please do let me know about that in the
कमेंट सेक्शन आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। सेशन के एंड के बाद आप ये मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है जी। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हाउसिंग कौन से गोल नंबर से रिलेट करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भी काम करता है ये। हाउसिंग इनिशिएटिव जो है हमारे इन दिस पार्ट, तो उसमें यूएई का अपना एक बेटर रोल होगा बिकॉज इट इज हैविंग द प्रेसिडेंसी ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएन हैबिटेट। और यूएन हैबिटेट कब एस्टैब्लिश किया गया था दोस्तों? सो ये भी आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो कुछ कुछ स्टैटिक चीजों को भी हमें याद रखना है एंड वी ऑल्सो वांट यू टू मेक सम एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड एज वेल। जब आप खुद से एफर्ट करेंगे तो आपको दो चीजें और ज्यादा पता चलती हैं, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट यस वी want your commitment as well in order to ensure that yes you are also giving all your hard work in order to be careful and basically make your current affairs preparation more stronger. Now it is the program's highest decision making body of 193 member states है इसके, and it is responsible for guiding global policies to improve living conditions in the cities and enhancing the quality of life in the urban communities. So basically I already told you जो हमारे settlements हैं, human settlements हैं, वहां पर we just want to make these houses more inclusive, safe, fair, right? That's why there is this organization that is UN Habitat. Now moving to the next part, now we are talking about the president of the 88th United Nations General Assembly. So United Nations General Assembly की एक women president बनी है. The name of the person is Annalena Baerbock. Annalena Baerbock is the name of the person who has been recently appointed as the president of the United Nations General Assembly. She is a former minister of Germany. तो ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं जर्मनी की और अब ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, ठीक है। पहली वुमेन प्रेसिडेंट है फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर्स ग्रुप। तो इतना याद नहीं करना इस इंफॉर्मेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द नेम ऑफ द पर्सन एंड द कंट्री फ्रॉम विच शी बिलोंग्स टू, ठीक है। यूएनजे की बात करें तो ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1945 के अंदर। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। टोटल मेंबर स्टेट्स आर 193, वेरी इजी टू रिमेंबर। यूएन हैबिटेट में भी हमने पढ़ा 193 मेंबर स्टेट्स हैं यूएन के अंदर, 193 टोटल मेंबर्स हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल दैट इज ऑन द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। सो recently Kumar Mangalam Birla ji has been recognized for his work and for leading Aditya Birla Group, which is the biggest Indian investor in the United States. तो इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया विद दिस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड एंड ही वाज बीन अवार्डेड अलोंग विद द 2 अदर पीपल, दैट इज अरविंद कृष्णा एंड तोशियाकी, राइट। सो अरविंद कृष्णा सीईओ है एंड प्रेसिडेंट है आईबीएम के और तोशियाकी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है हिताची के। सो इन 3 लोगों को मिला है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। जस्ट रिमेंबर कुमार मंगलम बिरला जी हैज वन द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, राइट। Next news article, President of South Korea. So Lee Jae-myung was elected as the President of South Korea और ये Yoon Suk-yeol को replace करेंगे as the President of South Korea. Recently we just covered one of the sports events. Can anybody tell me that what exactly is the name of that particular sport event which just concluded recently in South Korea? तो South Korea में वो event recently complete हुआ था and India is on the second position in the medals tally in that particular event and China was on the top. What is the name of that event? Please do let me know in the chat box. So please remember the name of the president, that is South Korea की नई president का नाम Lee Jae-myung. Next news article is about World Environment Day. So today we are celebrating the World Environment Day and on this date guys, this has been celebrated every year on 5th of June, ठीक है। और इस साल अभी हमने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के बारे में बात की और साउथ कोरिया विल बेसिकली बी द होस्ट कंट्री फॉर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड यू ऑल नो गाइस एट प्रेजेंट व्हाट इज द मेजर फैक्टर व्हिच इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट पे सबसे बड़ा जो प्रकोप किस चीज का है दोस्तों? दैट इज बेसिकली द प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसको हमें बीट करना है। सो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। सो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे अभी हम क्या करेंगे? लास्ट ईयर यू ऑल नो ऑन 5th of June 2024 प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च अ वेरी ब्यूटीफुल कैंपेन दैट इज एक पेड़ मां के नाम कैंपेन, राइट। सो एक पेड़ मां के नाम कैंपेन का 2.0 वर्जन लॉन्च किया जाएगा आज एंड अंडर दिस वी विल बी कवरिंग दिस पार्ट दैट क्या किया जाएगा। बट यहाँ पर जो प्लांटेशन ड्राइव है इट विल बी अ पार्ट ऑफ द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अगर हम बात करते हैं इस कैंपेन की तो यहाँ पर 10 करोड़ ट्रीज को यहाँ
प्लांट किया जाएगा फ्रॉम 5th ऑफ जून टू 30th ऑफ सितंबर 2025। और उस प्लांटेशन ड्राइव में हम किस पर फोकस कर रहे हैं? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, जहां पर हम 700 किलोमीटर की अरावली रेंज जो है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में वी विल बी प्लांटिंग द ट्रीज अंडर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, सो आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर। हम यहाँ पर एक्सपेंशन कर रहे हैं ना 5 किलोमीटर बफर एरिया अक्रॉस 29 डिस्ट्रिक्ट्स इन दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। तो स्टेट्स का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यहाँ पर याद रखिए कि 5 किलोमीटर का बफर एरिया पे हम ट्री प्लांटेशन करेंगे। 700 किलोमीटर की अरावली रेंज है जिसको हम फोकस करने वाले हैं अंडर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, राइट? सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, and we all know about the Ek Ped Maa Ke Naam initiative which was launched by Modi ji on 5th of June last year, World Environment Day, and this was basically a gesture where we wanted to plant a tree in the name of our mothers, right? So in the name of one's mother we wanted to give them tribute by planting the tree under this part. So 5th June, remember the date on which it was been launched, that is Ek Ped Maa Ke Naam campaign। ठीक है, तो अगर कैंपेन 2.0 की बात करते हैं, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जून 5th टिल सितंबर 30th 2025। सो दैट इज द राइट पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज स्टेटमेंट, दैट इज द इंडियाज फर्स्ट एवर पोलर रिसर्च वेसल। तो इंडिया का पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाने के लिए इंडिया ने एमओयू साइन किया है विद द नॉर्वेज कॉन्सबर्ग। तो यहाँ पर इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज जीआरएससी, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, which is based in Kolkata, and it has signed an MOU with the Norway's Kongsberg, with the help of which we will be setting up the very first ever polar research vessel, right? तो इंडिया का सेल्फ मेड पहला पोलर रिसर्च वेसल होगा ये, and this will be catering to the requirements of National Center for Polar and Ocean Research। आप सभी जानते हैं कि ओशंस में काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं हम दोस्तों, सो बेसिकली उसकी जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको कवर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट इंडियन पोलर रिसर्च वेसल। ठीक है, I hope this is clear to everybody। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ याद नहीं करना, just try to remember the name of these two entities between which this MOU has been signed, what is the aim of the MOU, that's it। Next news article, वंदे भारत मेंटेनेंस डिपोट। तो guys वो पहली वंदे भारत ट्रेन जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी, अब हमने एक मेंटेनेंस डिपोट भी बनाया है। ये डिपोट कहाँ बनाया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट हैज बीन बेसिकली लॉन्च्ड इन जोधपुर रेलवे डिवीजन इन राजस्थान। ठीक है, सो भगत की कोठी जोधपुर रेलवे डिवीजन के अंदर इसको बनाया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपोट ऑफ आवर कंट्री। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल। सो आई होप कि आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। सो आई रियली बिलीव दैट देयर आर सो मेनी क्रिकेट लवर्स हियर एंड दे कैन डेफिनेटली सी। आई डोंट थिंक कि इट इज वेरी कि यहाँ पर ये न्यूज पढ़ाने का कुछ काम है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे इन सभी स्टैट्स को, बट स्टिल द पीपल हु आर नॉट द क्रिकेट लवर्स उनके लिए काफी जानना जरूरी है that Indian Premier League 2025 has recently concluded and the final of the match was basically held in Ahmedabad Stadium। And my dear friends, in this final match of the IPL 2025, Royal Challengers Bangalore defeated Punjab Kings by 6 runs to win their maiden IPL title। Why exactly this IPL was more special? Because for the very first time in the 18 seasons, Royal Challengers Bangalore has won this particular title of Indian Premier League, right? So अगर हम बात करते हैं some key awardees during this particular IPL 2025, the player of the tournament was Surya Kumar Yadav, who plays for Mumbai Indians team। The emerging player of the year was Sai Sudarshan, the person who has really done made a good amount of runs here in this particular event। So Gujarat Titans के लिए खेलते हैं। Then Prasidh Krishna, basically the person who has won the purple cap। Purple cap किसको मिलती है? जो सबसे ज्यादा विकेट्स लेता है। The person who has got the most number of wickets in the event। So basically it is Prasidh Krishna and he is also from Gujarat Titans। Then orange cap was been won by Sai Sudarshan, who is again from Gujarat Titans। And fair play award was won by Chennai Super Kings, captained by MS Dhoni, right? So guys, these are the key important stats that we need to cover from the IPL। Now there is one more important stat that you can be asked in the exam, that is related to Krunal Pandya। So ये ऐसे पहले प्लेयर बने हैं इंडियन प्रीमियर लीग हिस्ट्री के जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता है इन द 2 डिफरेंट IPL फाइनल्स। सो बेसिकली 2025 का जो अभी हमारा मैच है उसमें इन्होंने जीता। उसके बाद इससे पहले 2017 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए इन्होंने ये अवार्ड जीता था। ठीक है, सो याद रखिए नाम कृणाल पांड्या। आई कैन सी इन द चैट बॉक्स पीपल आर गिविंग मी
the information about and their love about the RCB. Okay, so my dear friend, that's all from the IPL 2025 that you need to remember from exam point of view. Let's move on to the next news article, which is related to the retirements of some cricketers. So although yes, very less chances of them being asked in the regulatory bodies exams, but yes, for the banking exams you can definitely cover them. So यहाँ पर अगर हम बात करें, ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर क्रिकेटर, ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट से, जो कि 50 ओवर का गेम रहता है आपका, वहां से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है. नेक्स्ट पार्ट इज साउथ अफ्रीका विकेट कीपर बैटर हेनरिक क्लासन. So Henrik Klassen has announced his retirement from international cricket. इन्होंने complete international cricket से अपनी retirement announce कर दी है. Name is Henrik Klassen. He is from South Africa. He plays for South Africa. Glenn Maxwell plays for Australia. ठीक है, that's it from this part. तो हमने क्रिकेट की सारे न्यूज आर्टिकल्स को साथ में कवर कर लिया है with this part. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे, that is श्री हरि नटराज. So श्री हरि नटराज ने बेस्ट इंडियन टाइम क्लॉक किया है during a national during a swimming championship. This swimming championship took place in Singapore, and Shri Hari Natraj achieved the best Indian time in the men's 200 meter freestyle. तो 200 मीटर freestyle इवेंट के अंदर इन्होंने सबसे फास्ट इसको कवर किया, and he has created this record, और एक नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है दोस्तों. बट यहाँ पर लेट मी टेल यू हियर दैट किसी भी कंट्री के लिए नेशनल रिकॉर्ड अगर बनाना है तो नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर अगर आप वो रिकॉर्ड बनाते हैं तो ही वो आपका नेशनल रिकॉर्ड बनता है. सो दैट्स वाई अगर आप किसी और इवेंट के अंदर अगर ऐसी कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, सो इट इज बेसिकली कॉल्ड बेस्ट इंडियन टाइम. ओके, सो प्लीज रिमेंबर द नेम श्री हरि नटराज. So with this, my dear friends, we are done with all the important news articles of the last 2 days, that is of 3rd and 4th of June. And now the most important part of this session will begin, that is the MCQs. So it is very important for us to understand that, okay, we have covered all the important current affair articles, but are we really able to retain them? क्या मुझे सारी इंफॉर्मेशन याद है जो हमने कवर की है? कैसे पता चलेगा? How exactly I can analyze this? By solving the MCQs. So now I want all of you to participate in this MCQs practice and do let me know that yes, you have retained all the important information which is important to be covered from exam point of view. So बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन पॉपुलेशन सेंसस से. Just remember that part that I already told you here. So India will turn 27 after, Indian population will turn 27 after celebrating 26th birthday digitally with caste census. So ये हमने लाइन याद रखी थी for covering population census. और जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, my dear friends, what we need to cover? First we need to identify the central topic, and here the topic is population census 2027. So what is the first step? Identify the central topic. Second part is identify the demand of the question. What is a demand? It is asking you to identify correct set of statements. तो correct set of statements पर हमें identify करनी है. Now what is the third thing? We have to look after the keywords. तो हमें keywords पर focus करना है which are being mentioned here. तो पहली statement के keywords क्या हैं? First phase population census 27 commence 2026, 1st October 2026. किस पे फोकस करेगा? हिल एंड स्नो अफेक्टेड रीजन्स. कौन सी स्टेट्स हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. तो पहली स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट. आई टोल्ड यू कि पहला हमारा फेज 2026 में स्टार्ट होगा विद दिस स्नो हिट एंड हिली स्टेट्स. ओके, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट. फर्स्ट टाइम इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री सेंसस विल बी कंडक्टेड डिजिटली. तो पहली बार डिजिटली ये सेंसस किया जाएगा. ठीक है, एंड विल इंक्लूड इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट. तो कास्ट को इंक्लूड करेगा. एब्सोल्युटली राइट. सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट हियर. नाउ कम अंडर द थर्ड स्टेटमेंट. सेंसस 27 implemented under newly formulated framework which is different from the previous rounds of 1948 census act and census rules 1990. तो हमने आज के सेशन में कवर किया कि जो पुराने हमारे रूल्स थे उन्हीं को फॉलो करते हुए इस बार का सेंसस भी कंडक्ट किया जाएगा, एंड दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हियर. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 1 and 2. और किस किसने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है? कृतिका, गुरुराज, फ्रूटी, अर्जुन, हर्षल, बिजल. Absolutely right, my dear friends. Please mark +1 in your answer sheet that yes, you have got 1 mark for your examination. ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, the reference date for population census 2027 across most of the India. So my dear friends, please see, I am talking about here the most of India.
सो यहाँ पर हिली स्टेट्स, नो हिट स्टेट्स जो है वो कम है, और रेस्ट ऑफ इंडिया इज बेसिकली कवरिंग द वाइडर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो उनके लिए क्या रेफरेंस डेट होगी, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? We have already covered that will be in the March, and that is March 1, 2027. That is the right answer here. Okay, so now let's move on to the third question here. The third question is on the Sendai framework, and Sendai framework mein we just covered the 4 priorities for action. We just covered 4 priorities for action. यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि which of the following are correctly stated as one of the 4 priorities. So what exactly is the right answer here? So pehla statement, enhancing disaster preparedness. I told you first what we need to do, we need to identify, then we will strengthen, we will invest, and we will enhance. So ek enhancing disaster preparedness, absolutely right. Strengthen disaster risk governance, right. Investing in disaster risk reduction, right. Understanding disaster risk, that is also right. So what will be the right answer here? Right answer will be option E, that is all of the above. So option E is the right answer. And again, most of the people have given me right answer as option E. Well done, my dear friends. And now I am having a homework question. If you are someone who is not able to answer these questions, guys, do not worry about it. Just what you have to do, you have to again watch the session and then come back to this question. ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर. एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन द रामसर साइट्स. तो रामसर साइट्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, और हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने निमोनिक, जो हमने कवर किया था कि राजस्थान की पहली खिचड़ी खा के रामसर मीनार उड़े. ठीक है, तो अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे वेरी इजीली. अगर हम बात करते हैं होमवर्क क्वेश्चन अपने पिछले सेशन का, सो द क्वेश्चन वाज बेसिकली ऑन द स्कीम दैट इज एसपीएम ईपीसीआई, राइट. एंड हियर द राइट आंसर वाज ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए राइट आंसर था, एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी so many people giving me the right answers in the comment section, and they're also appreciating the session, and it's really good to see your having this appreciation from your end. And definitely guys, we will make sure that ये जो वे है हमारा कवर करंट अफेयर्स को कवर करने का, हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. सो यू कैन सी हियर बिजल, हरीश, राजश्री, अभय, गौतम, आरती, निष्ठा, एनके एंड आशीष, सभ्यम, रोशु, अर्णव, so many people are there. And you can see here I am having another slide here, right. So guys, it's really great to see your commitment, your dedication, and your hard work, and your dream of becoming the next officer will definitely come true if you are just keeping up with this particular momentum. ठीक है जी. So thank you so much for showering all your love, and apart from that, giving your right answers in the comment section. And now, my dear friends, if you have really liked this session, you can definitely subscribe the channel. And apart from that, let me tell you here ki what is the most important part. After watching this session, if you are thinking that okay, let's give it a try to another session also, क्यों ना एक और सेशन देखा जाए, तो अगले सेशन में आने से पहले एक चीज इंश्योर जरूर कर लेना कि आप आज का सेशन रिवाइज करके आए. और उसको रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहेगी. पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको सेशन का? टेलीग्राम चैनल पे. सो जस्ट click on the link given in the description of this session. There you will find the Telegram channel link, and you just click on it, join the Telegram channel, download the PDF. You will be getting the PDF within 24 hours. ठीक है, तो आज नहीं मिलेगी PDF, कल मिलेगी, but within 24 hours आपको PDF मिल जाएगी. ठीक है जी. So I hope this is clear to everyone. So now, my dear friends, that's all from the today's session. And now, if you are having any query, please feel free to ask your queries. या फिर अगर आपकी कोई mentorship guidance आपको चाहिए, definitely you can just share your email at hello@edutap.co.in. You can call us at 814-620-7241, and the team will connect you with us, and we will definitely hear all your queries, and we will make sure that all your queries are getting resolved, because these queries, be it they're small, be they are big, but they act as a kind of hindrance or the obstacle in your journey of becoming the officer. And we at EduTap, we just want that this journey of becoming officer should be as smooth as possible. ठीक है. So Ram is having one question. I have started watching your lecture from March 2025. Is it enough for this year exam? Because I started my preparation now, so I have to cover all the backlogs GA and current affairs. So Ram, it is very important for you to understand that whenever you are preparing for any regulatory body exams, तो एक timeline है जो हम basically हमें follow करनी होती है. What exactly is that timeline? See, for the phase 1 examination,
last 5 months of the current affairs are desirable to be covered, where last 3 months of the current affairs is the most important, because we see the major chunk of questions being asked of the last 3 months. And for the phase 2 examination में last 8 months of the current affairs is desirable, where last 6 months current affairs is the most important to be covered from examination point of view. इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए आपका एग्जाम 7th of June को है, तो आपको कब तक का करंट अफेयर कवर करना है? आपको 31st मई तक का करंट अफेयर कवर करना है, राइट? 31st मई तक का। तो यहां से हम इस टाइमलाइन को लेंगे जो हमने यहां पर कवर की, दैट मींस लास्ट 3 मंथ्स, तो 1st मार्च टू 31st मई का करंट अफेयर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इफ योर एग्जाम इज ऑन द 7th of June। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम की जो टाइमलाइन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन, ठीक है? तो अभी के लिए आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि आप मई से अपना करंट अफेयर करना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज May will definitely be becoming the important part of either your 5 months timeline or your 3 months timeline. तो पहले we are now in the month of June, तो पहले मई का करंट अफेयर कीजिए, जून का कवर कीजिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो। अगर आपने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अप्रैल का कवर कर चुके, दैट इज रियली अ गुड पार्ट, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन दैट you are watching this and is it really sufficient? Let me tell you that we are trying our best to cover all the most important current affairs which we see in the news articles, right? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में क्या क्या आएगा आपका? मान लीजिए कोई नई स्कीम लॉन्च होती है, कोई नया प्रोग्राम इनिशिएटिव लॉन्च होता है, या फिर कोई नई रिपोर्ट आती है, सो वी आर कवरिंग ऑल ऑफ देम हियर, ठीक है? सो आपका मेजर पोर्शन यहां से कवर हो जाएगा। एंड इफ यू कैन कॉम्प्लीमेंट these sessions with one of the compilation, definitely इससे क्या होगा? तो आपका ये करंट अफेयर तो अच्छे से कवर हो रहा है, रिवीजन भी हो रही है, रिटेंशन भी हो रही है, एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस, राइट? इसके अलावा हमारे रिवीजन सेशंस को भी आप कॉम्प्लीमेंट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई एग्जामिनेशन, अगर आप आरबीआई एग्जाम की बात तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको फाइनेंस 360 का सेशन भी देखना चाहिए, राइट? क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट फाइनेंस करंट अफेयर्स और आरबीआई नोटिफिकेशंस वहां पर कवर कराते हैं कृतिका मैम, ठीक है जी? अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आर हैविंग अ गवर्नमेंट स्कीम सेशंस एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 10:30 AM। तो गवर्नमेंट स्कीम सेशंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी सेशंस को देखते हैं, अच्छे से रिटेन करते हैं, रिवाइज करते हैं और हमारे मंथली रिवीजन सीरीज को भी फॉलो करते हैं, डेफिनेटली you will be able to score good amount of marks in your upcoming examinations, ठीक है? So I hope your query is resolved now, Ram, right? So you mentioned that you have to cover all the backlog, so make sure ये जो backlog आपको दिख रहा है वो आप इस timeline के according ही उसको cover करें, okay? Now I can see that there are no more queries in the chat box. So my dear friends, it was really great to have all of you here in the today's session. Now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy.